हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनअकैडमी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो अनअकैडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, एंड यू नो इफ देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी देन नो कॉम्प्रोमाइज इन रिजल्ट। व्हाट वी नीड योर डेडिकेशन, एंड वी आर assuring you that you are going to crack your GATE exam at first attempt. So get the Plus subscription now and start accessing unlimited live and recorded video lectures by India's top educator. Myself, Ajay Das. I'm MTech in Computer Science. I have a 8+ year of teaching experience. Till now, I have trained almost 20,000 plus engineering students for the GATE and PSUs. So I have also worked as a freelancer in many reputed institutes of India. Apart from that, I have qualified the GATE exam 5 times below the AIR 500 and also qualified the Chhattisgarh State Electricity Board exam with AIR 8. So download the Unacademy learning app and start your preparation in a positive direction. देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि once you will download the Unacademy learning app, you will be able to view the profile of each and every faculty. So you can have also some of the special classes. So my dear friends, if after checking the classes of the faculties who are taking the classes in an Unacademy platform, if you are not satisfied, then you can leave and you can do whatever you want. But I am telling you, my dear friends, once you will download it, once you will start your study, you will get an energy, and that energy will push you to prepare yourself, and that will make you to crack your competitive exam in a first attempt. So don't be late. लेट मत करिए, क्योंकि सोचते सोचते समय निकल जाती है. So download the Unacademy learning app. So what you will get, this is the major question which always used to arise in everyone minds. So my dear friends, आप लोगों को पता होगा Unacademy recently एक न्यू तरह का सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट किया है, दैट इज द आइकनिक. सो पहले प्लस तो था ही, अब आपके पास प्लस के अलावा जो मिल रहा है दैट इज द आइकनिक. सो लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू हैव वंस यू विल टेक द subscription. So one is the daily live classes, second one is the structure course and PDF, third one is the live test and quizzes, and the fourth one is the unlimited access. Means you can access the lectures again and again until you get the entire concept. So these are the basic things, and the major thing is learn with the top educators. So I have only mentioned few of the educators over here. If you want to explore more about the educators, what you can do, you can download the Unacademy learning app and you can see the profile of each and every educators, right? So these are the educators from the mechanical and electrical. So let's come to the GATE and ESE. So my dear friends, as we know that there are various branches for which the GATE is conducted, GATE and ESE is conducted, but for which branches the Unacademy is offering you for the preparation of the GATE and ESE, I have listed over here. So you can see mechanical, computer science, IT, electrical, instrumentation, production, chemical. So these are the branches for which the Unacademy is offering you for the preparation of the GATE and ESE. So don't be late. Choose your branch and get the subscription. So, but if you want to take the subscription, never forget to use the code, my dear friends. Never forget to use the code, that is the IFA, to get minimum 10% discount. So as I told you, there are two subscription model. One is the plus and the second one is the iconic. So already you know about the plus. You know about the plus, what is the plus subscription. So recently the Unacademy has introduced the new subscription model, that is the iconic. So my dear friends, if you are looking for the plus subscription, so of course iconic have some additional features, that's why the fees is a little bit high in comparison to the plus. But if you are looking for the plus subscription, then for the month wise the subscription fees is already mentioned. If you are taking the subscription of the 6 month, your fee structure will be 24,715. Similarly, if you are looking for the 12 month of subscription, 18 month of subscription, your fee structure will be like this. So any competitive exam required at least 8 to 10 months of dedication. So if you are looking
for 1 year of subscription, your fee structure will be this. And if you are in a second year or the third year, means if you are pass out or you are in a final year, you can go for the at least 12 month of subscription. Okay, but if you are in second year or the third year and you are looking for the GATE 2022 or 23, you can go for the 18 months or 24 months of subscription. So in all the scenario, once you will apply the code IFA, you will get the minimum 10% discount. My dear friends, already these are the actual fees. These are the actual fees, and your discounted fees will be for the 12 month will be 27,225, and this one is for the 18 month, and this one will be the 24 months. And this fee structure will be applied whenever you will apply the code IFA while taking the subscription. Are you getting my point or not? So these are the basic thing about the plus. Now let's see the Iconic. Since Iconic has the advanced features, so we are not introducing like 1 month, 2 month, 3 month or 6 month kind of subscription in case of Iconic. So if you want to go for the Iconic, you have to take the subscription of at least 12 month. So you can take either for the 12 month or for the 24 month. Are you getting my point? So for the 12 month, your subscription fees is 45,000, and for the 24 month, your subscription fees is 60,000. What is the extra thing that you are going to have in case of Iconic? You can choose your personal coach who will guide you time to time according to your performance, who will be responsible to solve all your doubts. Suppose there are various educators. Suppose there are various educators in the Unacademy platform, right? There are various educators in a Unacademy platform in a particular branch. So suppose there are 15 educators in the computer science. So out of 15, you can choose any one as your personal coach who will guide you according to your performance, who will clear your doubts, who will assist you to make better rank in your final GATE or ESE exam. Are you getting my point? So in that situation, that's why the fee structure is little bit high in case of plus subscription, or you can say the in comparison of the plus subscription. So my dear friends, again, once you will apply the code which I have written over here, that is the IFA, in both the scenario you will get the minimum 10% discount. Minimum 10% discount. Got it. Now let's see what is the difference between the plus and Iconic. So this is the plus subscription. So inside the plus subscription, first thing you are going to have India's best educators. So as you know, we don't compromise in the quality. So the best educators always you will get, either you are taking plus subscription or Iconic. So next thing is the interactive live classes. So you can have a live classes. Apart from that, the structure courses and PDF and live test and quizzes. So these are the basic thing which you will get in case of Iconic. In case of Iconic also. But what is the advanced thing that you are going to have in case of Iconic? The first thing is the personal coach. You can select anyone in your branch as your personal coach. Second one is the personalized test analysis. So your test, whatever the test for which you are appearing for, your test will be evaluated and you will be intimated personally so that you can get the improvement. Okay. The third one is the study planner. Means you will have some study plan according to the guideline which will be given to you. So the last thing is the study material. You are going to have a study material once you will take the Iconic subscription. Got it? So these are the things, or these are the difference between the plus and Iconic. So my dear friend, before leaving this introductory session, I would like to tell you one more thing. The code, that is the subscription code which I have written over here. This is the subscription code. While taking the subscription, you can use this code. So this particular subscription code, many students have a confusion that only for the GATE and ESE I should use this subscription code. No, my dear friends. If you are looking for, suppose if you or your known person or your relative, your friends are looking for any kind of competitive exam that is available
in Unacademy platform, all of them can use the code IFA to get minimum 10% discount. Are you getting my point? Minimum 10% discount. If you have any confusion, you can personally contact me on my Telegram number, that is the 9264954515. Got it? So suppose if some of your friends are looking for the UPSC, CAT, GRE, banking, SSC, JE, CGL, or your relative is like looking for the IIT, JE, NEET, 9th, 10th, whatever it is, if you are getting the subscription, you can use the code freely IFA to get the minimum 10% discount. So this is all about the Unacademy. So my dear friends, लेट नहीं करना है. अगर देखिए आप अपने लाइफ में फोकस्ड हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना. और सबसे बड़ा लाइफ में स्टेप्स होता है, वो होता है डिसीजन. अगर आपने डिसाइड किया है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज कोई भी आपको आगे नहीं पहुंचा सकता. सो आपकी एक जो सोच है, आपका अगर सोच है, इफ यू थिंक यू विल बिकम अ आईपीएस ऑफिसर, यू कैन बिकम. इफ यू थिंक यू विल बिकम अ लाइक you will become a IITian, you can become the IITian. But no one can force you to become any one of this. Are you getting my point or not? So आपको सबसे पहले एक सोच क्रिएट करना पड़ेगा, और सोच क्रिएट करते ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. माय डियर फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, जानते हैं सबसे बड़ा एडवांटेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आने का क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर हर तरह के एडुकेटर्स हैं. जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं कि सर मुझे हिंदी में समझ में नहीं आता है. मोस्टली जो साउथ से बिलोंग करते हैं या वेस्ट बंगाल या उन सब साइड से बिलोंग करते हैं, उनका एक कन्फ्यूजन होता है कि आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज हिंदी, बिकॉज मोस्टली टीचर आर लाइक टीचिंग इन हिंदी मीडियम. सो माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी इज द biggest, or you can say the largest online learning platform where all kind of faculties, or you can say the educators, are available. So some of the educators are taking the classes in Hindi medium, and some of the educators are taking the classes in English medium. So what you can do, once you will download the Unacademy learning app, you can see the profile, you can see the lecture of the educators, and accordingly you can decide which educator is taking the classes in English, and you can select that educator as your preparatory subjects. Are you getting my point or not? So don't have any confusion, क्योंकि आप मोस्टली जब भी लेक्चर्स देखते होंगे, लाइक यूट्यूब में हो या स्पेशल क्लास में हो, फॉर द ट्रायल बेसिस, यू आर एबल टू रियलाइज कि यहाँ पर तो ज़्यादातर हिंदी पढ़ाने वाले, लेकिन नहीं, कुछ इंग्लिश में भी पढ़ाने वाले हैं. यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू हैव टू फाइंड इट आउट, एंड देन यू हैव टू डिसाइड. तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना. अगर आपका डिसीजन स्ट्रांग है, देन यू कैन मूव फॉर द लाइक योर प्रिपरेशन. तो अगर आप प्रिपरेशन के लिए मूव कर रहे हैं, इफ यू आर डेडिकेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड, देन यू कैन सेलेक्ट द एडुकेटर्स, एंड अकॉर्डिंगली उसी एडुकेटर्स का आगे का सारा कर सकते हो. सो नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स. बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादे पे खड़े नहीं उतरते. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा. You have to understand this kind of small things if you are really looking for the competitive exam. So let's start the subject, computer network media access control part 2. So this is the slogan of the Unacademy. Let's crack it, because we believe we will prepare you in such a way that you would be able to crack your competitive exam in first attempt, whether it is a GATE ESE, banking, UPSC, or CAT, GRE, whatever it is. Are you getting my point or not? We required only your dedication. देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे जो मेजर पॉइंट होता है वो डेडिकेशन का ही होता है, ठीक है ना. आपको आपको अपने शेड्यूल टाइम पे खड़ा उतरना पड़ेगा, आपको वो क्लासेस प्रॉपरली करनी पड़ेगी, तभी जा करके रिजल्ट आता है. बच्चे सोचते हैं कि कुछ क्लासेस किए हैं, कुछ क्लासेस नहीं किए, तो ऐसे प्रिपरेशन नहीं होता है ना. अगर आप रियली डेडिकेटेड है, अगर आप हर एक लेक्चर्स को प्रॉपरली अटेंड करते हैं, हर एक डाउट सॉल्विंग क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करते हैं, हर एक टेस्ट को प्रॉपरली अटेंड करते हैं, और इन केस अगर किसी भी रीजन से आप टेस्ट छोड़ देते हो, या डाउट क्लासेस छोड़ देते हो, या एक्चुअल क्लासेस छोड़ देते हो, देयर आर रिकॉर्डेड फॉर्म ऑल्सो. once you will get the time, you can watch the recorded video lectures of the same class. So इसको बोलते हैं डेडिकेशन. अगर किसी रीजन से छूट भी रहा है तो मैं उसको कवर अप कर लूँ बिफोर द टाइम, ठीक है ना. लाइफ में टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है.
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट, दैट इज द कंप्यूटर नेटवर्क मीडिया एक्सेस कंट्रोल पार्ट 2. So my dear friends, this lecture you would be able to understand if you have covered my previous lectures. So let's see. देखिए ये सारे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन देखिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखा था. Okay, I hope I'm assuming that you people have attended my previous video lectures. So just see over here. कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था अलोहा. Okay, then we have seen slotted aloha, slotted aloha, and then we have seen CSMA. What is the meaning of CSMA? And all the persistent math, all the persistent point. So already this portion we have covered on 23rd November. So if you want to learn about these things, you can watch my video lectures of the yesterday class 23rd November at the rate 6. So let's move ahead. Now we need to learn about what is the CSMA by CD and what is the CSMA by CA. तो देखिए अब यहां से एक्चुअल गेट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है ना. CSMA बाई CD से हर साल गेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना. या तो CSMA बाई CD से होगा या तो एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम से होगा. नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग द CSMA बाई CD, ठीक है ना. तो या तो CSMA बाई CD होगा, या तो ये होगा, और या तो एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम होगा, ठीक है ना. इन तीनों में से मोस्टली टाइम CSMA बाई CD से ही क्वेश्चंस होते हैं. एक्सपोनेंशियल बैकअप जैसे कि 2019 में एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम से था, पिछले ईयर एक क्वेश्चन CSMA बाई CD से था. तो या तो यहाँ से या तो एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम से, मोस्टली टाइम यहीं से होता है. 90% क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं. बाकी एक क्वेश्चंस यहाँ से आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते. और या तो एक क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल टाइप्स को होंगे जो आपका CSMA बाई CD से हो और CA को मिक्स कर करके होगा, या यहाँ से कोई भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं. सो my dear friends, already I have told you that CD means collision detection. Collision detection. Okay. So the first thing you have to learn about the CSMA by CD is ये हमेशा वायर्ड नेटवर्क पे चलता है. किस पे चलता है? वायर्ड नेटवर्क. It is only applicable in the wired network, which you can also say Ethernet net. Ethernet. Are you getting my point? So this is applicable in the wired network because in wired network detecting a collision is possible. But if we are working on the wireless network, then collision cannot be detected. वायरलेस नेटवर्क में कॉलिजन डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना. इन सभी के पीछे लॉजिक है. वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी लॉजिक, एंड दैट्स व्हाई इन वायरलेस नेटवर्क वी बेसिकली यूज द कॉलिजन अवॉइड. सो ये जो है ये प्रोटोकॉल बेसिकली वायरलेस नेटवर्क पे एप्लीकेबल. वायरलेस, ठीक है ना. एंड थर्ड वन इज द एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम. सो अगर कॉलिजन होता है तो क्या डिसीजन होगा, ठीक है ना. उसके बारे में हम लोग बेसिकली डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम के थ्रू कैसे कॉलिजन रेट ऑफ कॉलिजन को रिड्यूस किया जाए. सो इट गिव्स waiting time to reduce
to reduce rate of collision, to reduce rate of. So कैसे ये वेटिंग टाइम देता है, कैसे रेट ऑफ कॉलिजन रिड्यूस होता है, वी विल लुक अपॉन दिस लेटर ऑन. So let's start from the CSMA by CD, which is basically applicable in the wired network, or you can say the Ethernet LAN. And let's see what kind of question the gate basically asks from the CSMA by CD. Okay, so CSMA by CD, CSMA by, जो कि हमारा Ethernet LAN पे चलता है, ये बेसिकली प्रोटोकॉल रन करता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द CSMA बाय CD. देखिए, जनरली जब हम लोग फ्लो कंट्रोल का स्टडी करते हैं तो फ्लो कंट्रोल में कोई भी पैकेट डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाउ वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट. But in case of CSMA by CD, the first point you have to understand that there is no concept of acknowledgement. First concept is there is no concept of ACK means acknowledgement. सो अगर एक्नॉलेजमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पैकेट डिलीवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? हाउ वी विल कम टू नो? सो हाउ यू विल कम टू नो द पैकेट लॉस, that is the due to the collision, because what is the meaning of CD? CD means collision detection. So from collision sender would be able to detect loss, would be able to detect. Okay, since there is no concept of acknowledgement, so due to the collision the sender would be able to detect the loss, right? So अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेंडर का जो फ्रेम साइज होगा वो क्या होगा. ओके, what is the मिनिमम, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसलिए ध्यान से समझिएगा. मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम. वेलकम जसप्रीत, गुड इवनिंग. व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम so that sender can detect got it. I am fine जसप्रीत, मस्त हूँ. आई होप यू पीपल आर लर्निंग वेल. आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होगे, ठीक है ना? So my question is here, what is the minimum size of frame so that the sender can detect the collision? You can say it can detect the collision, or collision means packet का loss होना, so can detect the loss. Okay, now let's see how the sender would be able to detect the collision. Okay, first of all, and then we will see what will be the minimum size of C. And we are using the concept to detect the collision, we are using the concept that is the CSAMA. What is the meaning of CSMA? Carrier sense multiple access. Just see over here. See, suppose this is the node A. Similarly, this is the node B. This is the node C. This one is the node D, and this one is the node. और ये जो नेटवर्क है, दिस इज द ईथरनेट लैन. यहाँ पर हम लोगों ने नेटवर्क कैसा लिया है? ईथरनेट लैन. सो
since we are using the concept CSMA. CSMA का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? Carrier sense multiple access means before sending a data frame, every node will sense the medium. Before sending the data frame, every node will sense the medium. और देखिए सेंस करने का भी एक अपना लिमिटेशन होता है, ठीक है ना? सेंस करने का भी एक अपना लिमिटेशन होता है. जब सपोज एक नेम प्लेट है, ठीक है ना? एक कार का नेम प्लेट है जिसमें कार का नंबर लिखा हुआ है. तो कार अगर थोड़े से डिस्टेंस में है तो आप उसको देख सकते हो, पूरे नंबर को देख सकते हो. तो कार का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वो नंबर आपके आंखों से क्या होगा? इनविजिबल होता चला जाएगा, ठीक है ना? सो हर एक चीज के लाइफ में लिमिटेशंस है. इफ यू आर क्रिएटिंग एनी मशीन्स, इट हैज सम लिमिटेशन. दूरबीन है तो उसके भी अपने लिमिटेशंस है. आप दूरबीन के पावर को बढ़ाएंगे, लिमिटेशंस बढ़ता जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से आप चंद्रमा को देख सकते हो, ठीक है ना? या चंद्रमा में क्या क्या हो रहा है उसको आप देख सकते हो. तो हर एक डिवाइस के अपने लिमिटेशंस होते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, सपोज देयर इज अ नोड ए. तो नोड ए का अपना एक सेंसिंग लिमिटेशन होगा. तो सपोज इस एरिया तक नोड ए सेंस कर सकता है, मीन्स मैक्सिमम पॉइंट इथरनेट लैन का ये है, यहाँ पर ये सेंस कर सकता है. सिमिलरली नोड बी का भी एक अपना सेंसिंग लिमिटेशन है, वो इस एरिया तक अपना सेंसिंग कर सकता है. सिमिलरली नोड सी, वो इस एरिया तक अपना सेंसिंग कर सकता है. सिमिलरली द नोड डी, वो इस एरिया तक अपना सेंसिंग कर सकता है. सिमिलरली द नोड ई, वो इस एरिया तक अपना सेंसिंग कर सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो एवरी नोड हैज सम लिमिटेशन एंड इट कैन सेंस एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना? तो दिस इज द सेंसिंग एरिया. दिस इज द सेंसिंग area. This is the sensing area. Are you getting my point or not? Now, just imagine a situation. Just imagine a situation. देखिए collision detect कैसे होता है. तो suppose means whenever you are sending a data frame inside the network, it will become a signal. तो हम लोग सिग्नल की बात करते हैं. तो सपोज अगर आप यूनिपोलर से सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? ये यूनिपोलर सिग्नल हो गया. दिस इज द यूनिपोलर सिग्नल. तो यूनिपोलर सिग्नल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? +5 वोल्ट, दिस वन इज द 0, ओके, एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग 1 1 0 1 0 0 अगेन 1. So this signal is carrying the data that is nothing but 1 1 0 1 0 0 1 1 and so on. So my dear friends, just imagine a situation where two different signals are collided. तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना? एक सिग्नल ये है, ठीक है, और दूसरा सिग्नल ये है, ठीक है. ये दूसरा सिग्नल ये है और दोनों सिग्नल +5 वोल्ट पे चल रहे हैं, है ना? दोनों सिग्नल +5 वोल्ट पे चल रहे हैं. सो अगर ये दोनों सिग्नल आपस में कोलाइड होता है, ये दोनों सिग्नल आपस में अगर कोलाइड होता है तो जो न्यूली क्रिएटेड सिग्नल्स होंगे उसके वोल्ट्स कितने हो जाएंगे? दिस वन, सो इट विल बिकम +10 वोल्ट, फ्रॉम 0 to 10 volt. Yes or no? So whenever we are sending two different signals in a network, and if they are collided, here we are passing the two different signals. These are the two different signals, and if they are collided, the new signal will look like this. तो जब इस सिग्नल्स पे सेंसिंग होगा, इस पर्टिकुलर सिग्नल्स पे सेंसिंग होगा, so after sensing on this particular signal, we can immediately predict that this particular signal is collided. This particular signal is created due to the collision. Okay, so this is the collided signal. ये एक्चुअल सिग्नल नहीं है. ये सिग्नल कैसे जनरेट हुआ होगा? ये सिग्नल कॉलिजन के बाद जनरेट हुआ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा कि अगर दो कोई भी पार्टिकल्स अलग अलग एनर्जी लेवल से आपस में कोलाइड करता है. सपोज दिस पार्टिकल हैज अ एनर्जी E1
this particle has an energy E2. So after the collision, the energy will become E1 plus E2. Again here it will become E1 plus E2. Yes or no? So यहाँ पर यही फिजिक्स अप्लाई हो रहा है कि अगर दो सिग्नल्स को हमने कोलाइड कर दिया तो क्या होगा, जो न्यू सिग्नल्स क्रिएट होंगे इट विल लुक लाइक 10 वोल्ट. सो अगर इस पे हम लोग सेंसिंग अप्लाई करेंगे, so sensing is a device which can check the strength of the signal also, which can check the strength of the signal also. So whenever we are checking the strength of the signal, we are immediately able to realize this signal has been collided, and immediately अब ये जो collision है किसी न किसी नोड के सेंसिंग रेंज के एरिया पे हुआ होगा. टेक अ रियल एग्जांपल. सपोज आप किसी रास्ते से जा रहे हो, ठीक है ना, किसी रास्ते से जा रहे हो, आप एक एरिया में रहते हो, ठीक है ना, आप चंडीगढ़ उठा लो, कुछ भी उठा लो, अपने एरिया को उठा लो. आप अपने एरिया में रहते हो और आप मार्केट में सब्जी लेने गए, ठीक है ना, रास्ते से मार्केट में सब्जी लेने गए और रास्ते में क्या हुआ, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया. तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है आप क्या करते हो, इसका इंफॉर्मेशन, भाई एक ह्यूमन नेचर है, इसका इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, इमिडिएटली वी कॉल टू आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स, एंड वी इन्फॉर्म देम कि यहाँ पर अभी क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी भीड़ है, आप लोग बाहर मत निकलना क्योंकि आप फिर जैम में फंस जाओगे. सो ये एक ह्यूमन नेचर है, हम इसके बारे में इमिडिएटली सबको बता देते हैं ताकि कोई भी इस नेटवर्क से पास ना हो. Similarly, whenever this collision, suppose this collision has been occur over here, ये जो collision है इसके सेंसिंग रेंज पे हुआ, ठीक है ना, तो इसका इंफॉर्मेशन किसके पास है, डी के पास है, अभी तक ए के पास नहीं है, क्योंकि ये जो collision है डी के सेंसिंग रेंज में हो रहा है, तो इसका इंफॉर्मेशन सिर्फ डी को मिलेगा. So as soon as the D will detect the collision, it will inform all the nodes which is in the Ethernet LAN to inform just stop transmitting your frame. अब अपना फ्रेम ट्रांसमिट करना बंद कर दो, या तो अगर करने वाले हो तो मत करो. Are you getting my point or not? So immediately the node D will inform all other node in the Ethernet LAN that do not transmit any frames, or if you wish to transmit then stop for a while. कुछ समय के लिए आप वेट कर लो and then you can transmit because just I have detected the collision. Fine. So इस तरह से पूरा चलता है ये प्रोटोकॉल. So suppose node A is sending its data frame, ठीक है ना, तो ये अपना डेटा फ्रेम सेंड कर रहा है. आप इसको देखना. तो सपोज किसी टाइम इंस्टेंस में इसका डेटा फ्रेम यहां पर है और इसी समय नोड बी अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो क्या ये कभी करेगा? नहीं करेगा. बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSMA? CSMA मीन्स करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, सेंस बिफोर ट्रांसमिट. आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस यस्टरडे. व्हाट इज द CSMA मीन्स? सेंस बिफोर ट्रांसमिट. सो अगर नोड बी अपने डेटा फ्रेम को सेंड करना चाहता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मीडियम को सेंस करेगा. इफ द मीडियम इज आइडल देन इट विल ट्रांसमिट. इफ मीडियम इज नॉट आइडल इट विल नेवर ट्रांसमिट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो as soon as the node B will sense the medium, it will find the medium is busy because already the first bit of node A has reached over here. So ये अपने ट्रांसमिशन को अभी रोकेगा. सो इमेजिन ये बिट्स आगे चलता ही जा रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया है. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया है और इसी टाइम पे आप इमेजिन करो एक और सिचुएशन. नोड ई ने मीडियम को सेंस किया. नोड ई ने मीडियम को क्या किया? सेंस किया. तो नोड ई को इसका मीडियम क्या मिलेगा? आइडल मिलेगा. सो अगेन नोड ई विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग इट्स फ्रेम. तो ये भी अपने फ्रेम्स को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना. और इसका पहला बिट यहाँ पर है और इसका पहला बिट यहाँ पर है. सो क्या होगा, इसके पहले बिट्स यहाँ तक पहुंचेंगे, है ना. इट विल रेस्ट टू हियर एंड इसका जो पहला बिट है यहाँ पर पहुंचे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा भाई? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? गॉट इट.
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉलिजन हो जाएगा। और इस कॉलिजन को कौन डिटेक्ट कर रहा है? दिस पर्टिकुलर कॉलिजन इज डिटेक्टेड बाय नोड डी। दिस पर्टिकुलर कॉलिजन इज डिटेक्टेड बाय नोड डी। So as soon as the node D will detect the collision, it's the responsibility of the node D to inform all other nodes in this network. So जब तक नोड ए का पहला बिट यहां तक पहुंचा है, ठीक है ना, और इसी टाइम पे अगर नोड ए ने अपने लास्ट वाले बिट को छोड़ दिया, ठीक है ना, तो कभी भी नोड ए अपने इस फ्रेम को रीट्रांसमिट नहीं कर पाए। See, what is the basic concept? Just try to understand. See, the basic concept is once you have transmitted the complete frame into the network, once you have transmitted the complete frame into the network, you cannot retransmit. You cannot retransmit it. Are you getting my point or not? देखिए, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता है, फ्रेम को कंप्लीट ट्रांसमिट करने के बाद उसका एक कॉपी सेंडर अपने पास रखता है and the sender is waiting for the acknowledgement. So as soon as the acknowledgement will be received, the sender will delete the copy of that frame from its buffer. तो यहाँ पर फ्रेम का कॉपी रखने का रीजन क्या है? Because the sender is waiting for the acknowledgement in case of flow control protocol, right? क्योंकि फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल में सक्सेसफुल डिलीवरी is intimated by the acknowledgement, and that's why sender is keeping the copy of the same. Got it? But in case of CSMA by CD, since there is no concept of acknowledgement, then the sender will never keep any copy of that frame. So once the frame is transmitted, it will never keep any copy of that frame. And suppose after the complete transmission, the sender has detected the collision. इसने जो फ्रेम सेंड किया था वो कोलाइड हो चुका है। अब अगर ये कोलाइड हो चुका है तो ये डेस्टिनेशन होस्ट से रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर फ्रेम को जिसको इसने ट्रांसमिट किया था, अब उसको ये रीट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी पूरा का पूरा फ्रेम अपने बफर से रिमूव कर दिया। एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रेम लेंथ द सेंडर शुड कीप टू डिटेक्ट द कॉलिजन। सो आप इमेजिन करो एक सिचुएशन, सपोज फ्रेम का 90% पास हो चुका है और कितना परसेंट बचा हुआ है सेंडर के पास? 10% बचा हुआ है। और इस टाइम इंस्टेंस में अगर सेंडर ने कॉलिजन को डिटेक्ट किया तो वो क्या करेगा? वो इमीडिएटली ट्रांसमिशन को रोक देगा। बट यहां पर ये कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए कि सर 90% तो बिट्स निकल चुका है, ठीक है ना, तो बचा तो 10% बिट्स। अगर ये कोलाइड हो गया तो 10% ही वो बाद में सेंड करेगा, इतना डेटा तो सेंड नहीं कर पाएगा। नो, जब तक पूरा का पूरा फ्रेम ट्रांसमिट नहीं होता है ये बफर से कभी भी रिमूव नहीं होगा। प्लीज माइंड इट, गॉट इट? सो इस पॉइंट्स को मैं एक पेज में लिख दे रहा हूं ताकि आप कभी भी रिवीजन करो, आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सी, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फ्लो कंट्रोल के बारे में, तब आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। इन केस ऑफ फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या होता है? सेंडर सेंड्स फ्रेम and keep one copy of it in its buffer, in its as soon as acknowledgement receives, it delete the copy, otherwise it retransmit
द सेम फ्रेम, द सेम फ्रेम, जो कि हमारा कॉपी किया हुआ था, जो कि हमारा क्या था, कॉपी किया हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो हियर व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द कॉपी? इफ द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीविंग देन डिलीट इट। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ठीक है ना, तो सेंडर इमीडिएटली क्या करेगा, उस कॉपी वाले फ्रेम को फिर से रिट्रांसमिट कर देगा। तो यहां पर एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं और इसीलिए सेंडर अपने पास कॉपी रख रहा है, ठीक है ना, इसीलिए सेंडर अपने पास क्या रख रहा है, कॉपी अपने पास स्टोर करके रख रहा है। बट इन केस ऑफ CSMA by CD, please try to understand the difference between flow control and CSMA by CD. CSMA by CD. So in this situation, since there is no concept of acknowledgement, तो सेंडर अपने पास कॉपी नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलिजन है वो, यहाँ पर जो लॉस है वो कॉलिजन से डिटेक्ट होता है। since there is no concept of acknowledgement in CSMA by CD, so sender does not keep any copy after complete transmission of frame. After complete transmission of got it, after the complete transmission of frame, means कंप्लीट ट्रांसमिशन से पहले ही उसको क्या करना पड़ेगा, कॉलिजन को डिटेक्ट करना पड़ेगा। बिफोर द कंप्लीट ट्रांसमिशन इट हैज टू डिटेक्ट द कॉलिजन। अदरवाइज अगर कंप्लीट ट्रांसमिशन होता है तो वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक इन सच अ वे so that the frame should be successfully delivered. Okay, so before the means it has to detect collision, or you can say loss, before complete transmission. If it is happening, otherwise क्या होगा, पैकेट शुड बी सक्सेसफुली डिलीवर, अदरवाइज फ्रेम should be successfully delivered to its destination. Now I think you are able to realize the things. Okay, definitely Subhangi, just wait. Subhangi, definitely I will explain each and everything about the CSMA and CSMA by CD. So till now you are able to understand the things. अभी तक जो भी मैंने बताया है शुभांगी गोयल, are you able to catch this particular things? Okay, fine. So my dear friends, अब हम लोग अलग अलग सिचुएशंस पे बात करेंगे, देखिए मैं इस तरह का नेटवर्क बना रहा हूं, ठीक है ना, दिस इज द ईथरनेट लैन, दिस इज द ईथरनेट, एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर एक नोड का अपना एक सेंसिंग रेंज होता है। ये सभी स्टेशंस हैं इस ईथरनेट लैन पे, A B C D N
see, as I told you, every node has its sensing range. हर एक नोड का अपना अपना एक सेंसिंग रेंज होता है, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, नोड ए हैज ट्रांसमिटेड इट्स डेटा फ्रेम और ये डेटा फ्रेम का ट्रांसमिशन चल रहा है, 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 और ये यहां पर आ गया। सो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अगर नोड ए का जो डेटा फ्रेम है वो यहां तक पहुंच गया है, यहां तक पहुंच गया। द फर्स्ट बिट हैज रीच ओवर हियर, द फर्स्ट बिट हैज रीच ओवर हियर, ओके। सो इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में नोड बी अगर मीडियम को सेंस करेगा, व्हाट द नोड बी विल फाउंड, it will find the medium is busy, and again the node C will find the medium busy, node D will find the medium busy, so none of the node will transmit its data frame. Again, if the node E will sense the medium, it will find the medium as a busy, because already the first bit has entered into the sensing range of node E. So every node will stop its transmission, and what will happen, ये सक्सेसफुली यहां पर डिलीवर हो जाएगा, सक्सेसफुली यहां पर क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो मींस जो नोड ए का फ्रेम है वो एटलीस्ट यहां से लेकर करके यहां तक होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? द फ्रेम लेंथ ऑफ नोड ए शुड बी एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ जस्ट टेक द अनदर सिचुएशन, अब एक और सिचुएशन हम लोग एज्यूम करते हैं। अब ये वाला सिचुएशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। दिस इज द नोड ए, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड सी, दिस वन इज द नोड, ओके। सो दिस इज द सेंसिंग रेंज ऑफ नोड ए, दिस इज द सेंसिंग रेंज ऑफ नोड डी, and this is the sensing range of node point, ठीक है ना। ये हमारा नोड E है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, नोड A इज ट्रांसमिटिंग इट्स डेटा फ्रेम और ये ट्रांसमिशन चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और इसका फर्स्ट बिट यहां तक पहुंच चुका है। द फर्स्ट बिट ऑफ नोड A हैज रीच्ड ओवर हियर, and in this movement, whenever the node E will sense the medium, what it will find, it will find the medium as a idle, yes or no, क्योंकि इसके सेंसिंग रेंज में कोई भी सिग्नल डिटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो सिग्नल है वो नोड D के सेंसिंग रेंज में। सो व्हाट विल हैपन, द नोड E will start transmitting its data bits, और जब तक ये यहां पर पहुंचेगा, जब तक इसका डेटा बिट्स यहां तक पहुंचेगा, एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर डेटा बिट्स विल रीच ओवर हियर, एंड इन दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन, collision. In this point what will happen, the collision. Are you getting my point or not? So अब यहां पर कॉलिजन हो रहा है। अब सोचो कि अगर नोड ए ने इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में जब इसका पहला बिट यहां पर पहुंचा था, अगर ये अपने लास्ट वाले बिट को छोड़ देता है, लास्ट वाले बिट को अगर ये छोड़ देता है, तो क्या कभी भी, इवन दो द कॉलिजन इज डिटेक्टेड, नोड ए इस पर्टिकुलर फ्रेम को रीट्रांसमिट कर पाएगा? नो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द रीट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो कभी भी नोड ए अपने लास्ट वाले बिट्स को यहां पर नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, अभी भी ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू रखेगा। लेकिन सिंस द नोड ई, since the collision has occurred in the sensing range of node E, so it is the responsibility of the node E to inform about this collision to all other node in the Ethernet LAN. So यहां पर ये responsibility किसका है? See over here. Since collision is occurred in sensing range of
sensing range of node E. So it is responsibility of node E to inform about this collision to all other nodes. भाई अगर इस कॉलिजन का ये इंफॉर्मेशन सबको देगा तो वो किसी फ्रेम के ही थ्रू देगा ना. सो व्हाट द नोड ई विल डू, इट विल इमीडिएटली क्रिएट अ फ्रेम and that is called the jamming frame. That is called the jamming frame. Immediately it will create a frame that is called the jamming frame. So jam का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी नेटवर्क जैम हो जाना. तो यहाँ पर चूंकि कॉलिजन हो रहा है तो इसके बिहाफ पे वो इमीडिएटली एक जैमिंग फ्रेम क्रिएट करेगा और इस फ्रेम को वो आगे नेटवर्क पे क्या करेगा, ड्रॉप करेगा. और ये जैमिंग फ्रेम, again the same jamming frame will reach to each and every node. तो नोड डी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा और अल्टीमेटली ये जैमिंग फ्रेम किसके पास जाएगा, ए के पास भी जाएगा. So as soon as this particular jamming frame will reach to the node A, what the node A will do, it will immediately stop the transmission. तो जब तक ये जैमिंग फ्रेम यहां तक नहीं पहुंचता है तब तक नोड ए को अपने फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू ट्रांसमिट करते रहना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जब तक ये जैमिंग फ्रेम नोड ए के पास नहीं आता है तब तक नोड ए को अपने फ्रेम्स को ट्रांसमिट करते ही रहना पड़ेगा. एंड दैट विल बिकम अ मिनिमम फ्रेम लेंथ. दैट विल बिकम द मिनिमम फ्रेम length. So my dear friends, what minimum frame length we are achieving from here? So this is the twice of this particular distance. This is the twice of this particular distance. So ethernet LAN में दो एंड पॉइंट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और इसके जो टाइम होंगे उसका ट्वाइस टाइम तक इसको अपने फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू ट्रांसमिट करते रहना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एंड दैट्स व्हाई इट शुड इन्फॉर्म दिस कॉलिजन टू ऑल अदर नोड्स. यू हैव टू राइट वन मोर सेंटेंस, बाय जैमिंग सिग्नल. बाय जैमिंग सिग्नल. भाई कोई भी फ्रेम नेटवर्क में आते ही सिग्नल बन जाता है तो आप इसको फ्रेम भी बोल सकते हैं और यू कैन से द सिग्नल, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बिकॉज बफर के अंदर फ्रेम हम लोग बोलते हैं और जैसे ये फ्रेम नेटवर्क में आता है इट इज नोन एज सिग्नल. सो कितने टाइम तक नोड ए को अपना फ्रेम कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट करते रहना पड़ेगा. सो द डिस्टेंस ऑफ टू एंड पॉइंट का जो टाइम है, इसका ट्वाइस. सो जस्ट सी ओवर हियर, suppose distance of two end point, or in other language what you can say, length of Ethernet cable. Cable it is given as suppose d kilometer, okay, and speed of signal, हर एक सिग्नल का अपना स्पीड होता है. स्पीड ऑफ सिग्नल इज गिवन एज s मीटर पर सेकेंड. सो टाइम क्या होगा, तो दिस टाइम इज नोन एज प्रोपागेशन डिले. दिस टाइम इज नोन एज propagation
ओके, प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले का मतलब क्या होता है, एक सिंगल बिट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगता है। तो रादर देन सेइंग द प्रोपागेशन डिले, यू कैन से द मैक्सिमम प्रोपागेशन डिले। ठीक है ना, किसी भी इथरनेट लैन पे दो एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम प्रोपागेशन डिले होगा। सो द मैक्सिमम प्रोपागेशन डिले, दैट इज द टीपी, विल बिकम d by s. So now I am trying to calculate the minimum frame length. Minimum frame length to detect the collision. Frame length of sender to detect collision. So this is basically L. So what will be this? This is the twice of TP, और अगर इसको हम लोग बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो it will become the number of bits. This will become the number of. So my dear friends, the minimum frame length will become this. Minimum frame length will become this, twice of TP into R. If we are considering T of jam tending to 0, T of jam tending to 0, यहां पर हम लोगों ने जैमिंग सिग्नल का ट्रांसमिशन टाइम एज्यूम नहीं किया है। ठीक है ना, अगर ट्रांसमिशन जैमिंग सिग्नल का ट्रांसमिशन टाइम अगर आप 0 लेते हो तो 2 TP into R होगा। If suppose they have considered the transmission time of the jamming signal also, so what will be the L minimum? So case 2, क्योंकि 2 बार गेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। if T of jam is not ignorable, then मिनिमम फ्रेम लेंथ कितना हो जाएगा? तो जो टोटल टाइम था ये कितना हो जाएगा? 2 TP तो था ही, अब इसमें ऐड हो जाएगा T of jam into R. Got it? This one will become the L minimum. So if nothing is given, then you have to consider the T jam is equal to 0. T jam is equal to 0. So इतना मिनिमम लेंथ होना ही चाहिए फ्रेम का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना और कॉलिजन डिटेक्ट होने के बाद उसके इंफॉर्मेशन का आना। तो टीपी जाने में और टीपी आने में इतने टाइम तक नोड ए को अपने फ्रेम्स को कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट करते रहना पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो according to this concept, let's try to solve some of the numerical. So this is the numerical, okay, and the numericals which I am considering over here, you are not going to find in any booklet, in any GATE paper or anywhere. So I have just considered the unique problem related with the GATE or in the pattern of GATE. So let's see what is the problem is saying. A network with the Ethernet LAN. So whenever I am saying the Ethernet LAN, must be they are talking about the CSMA by CD. Are you getting my point or not? Must be they are talking about the CSMA by CD protocol or Ethernet LAN protocol in a MAC layer. MAC layer means media access control. Media access control layer is running at 100 Mbps. So my dear friends, R is the bandwidth over here. It is given as 100 Mbps. 100 Mbps. Okay, over the 1 kilometer cable. So the distance is given as 1 kilometer and the signal speed in the cable is 2 into this. So speed of the signal is given as 2 into 10 to the power 8 meter per second. So if you know the distance and signal speed, you can calculate the TP. So TP is nothing but distance by speed. So distance is 1 kilometer. So 1 kilometer means 10 to the power 3 meter
divided by speed, that is the 2 into 10 to the power 8 meter per second. So this one will become like 2, sorry 1, and this is becoming the 6, and 2 5 ja 10. Ultimately it is coming out to be 5 microsecond. Now what the question is asking, the minimum frame size in this networks is, and you have to find out the answer in bytes. So this is the numeric type question. This is the numeric type questions where you have to find out the number of bits required for the minimum frame length in bytes. So you know, since they are directly asking the number of minimum size of frame, means they are assuming that t jam is tending to 0, yes or no. If no information is given about the jamming signal, means we will assume that t jam is equal to 0. So here L minimum, that is the minimum frame length, will become 2 TP into R. R means bandwidth, yes or no. 2 TP into R. Now 2 into what is the TP? This is the TP, that is the 5 microsecond. Micro means 10 to the power minus 3 second into what is the R given as 100 Mbps. This is the 100 into M means 10 to the power 6 PS. PS means bit per second. So this second will be cancelled out. 10 to the power 6, 10 to the power minus 6, and 6 will be cancelled out. So it will become 1000 bits. So convert the 1000 bits into bytes. So it will become 1000 divided by 8 bytes. It will become 125 bytes. This one will become the final. This one will become the final answer. So the final answer of these questions will be 125. So in the numeric box, you have to answer the value 125. Got it, everyone? So this one will become the final answer. So let's see the one more or another example related with the CSMA by CD. Just see over here. What the question is asking? The question is asking, in CSMA by CD protocol, the signal speed is this, bandwidth is this. If the minimum size of frame is this bytes, then find the length of cable in kilometer. So my dear friends, already we know that L minimum in Ethernet LAN or the CSMA by CD is equal to 2 TP into R. And what is the L minimum is given? So L minimum is given as here, minimum frame length is given as 200 bytes, okay, and bandwidth, that is the R, is given as 10 to the power 7. Please mind it, it is given in bits per second, okay. And what is the speed of signal is given? It is given as 2 into 10 to the power 8 meter per second. So just replace the value over here. So this is nothing but L minimum, so it is given as 200 bytes is equal to 2 into what is the meaning of TP? This is the distance by speed into R. What is the meaning of R? R is given as 10 to the power 7 bits per second. So my dear friends, here it is given in bytes, here it is coming out to be in bits. So either convert both into bytes or convert the both into bits. So I am converting both into bits. So it will become 200 into 8 bits is equal to 2 into D, which we need to find out, and S. What is the value of S is given over here? The S is 2 into 10 to the power 8 meter per second, and into it is given as 10 to the power 7 bits per. So this second will be cancelled, this bits will be cancelled, and 10 to the power 7 it will be cancelled.
and from these two this will be cancelled. So finally the D is coming out to be, it will carry the meter with it, so D will become 200 into 8, and from here what we are getting, only the value 10, so 10 meter. So this one will become 16,000 meters. So this one will become 6 kilo, 16 kilo. So finally we are getting the distance, as a 16 kilometer, and you have to answer the question in the kilometer. So the numeric answer of these questions will become 16. So in this manner you can easily solve this kind of question if you know the entire derivation, because they can ask the theoretical type of questions. If you only know the formula, you cannot solve the mostly questions which is of theoretical type. So you have to know the how the formula has been derived. So in this way you can easily solve this particular type of problems, and basically the GATE usually asks this kind of problem 90% in their paper. So that's all for today, dear friends. So once again I will tell you, all of my friends, never forget to use the code IFA to get minimum 10% discount. And this is the problem from the exponential backoff algorithm. So in part 3 I will cover up the next protocol, that is the exponential backoff. So just be with me. If you really want to know or learn the entire media access protocol, then just be with me. I will explain each and everything one by. So soon I am launching the part 3 of the media access control, where I will deal the exponential backoff algorithm. So thank you very much guys. If you are liking my video, then hit the like button, put your valuable comments, never forget to subscribe the channel and press the bell icon button to get all the notification. So जब कभी भी मैं ऑनलाइन आऊंगा, अगर आप बेल आइकन बटन को प्रेस करते हो, whenever I will appear online, you will get the notification and none of the lecture you are going to miss. Are you getting my point? So never ever forget to subscribe this particular channel. So if you want to communicate with me regarding the concept or the problem or the doubts, you can text me in my telegram number, that is the 9264954515. Okay, must subscribe this channel and put your valuable comments so that the other students will get the inspiration. And this is my promo code IFA. You can use this particular code to get minimum 10% discount. So there are two subscription model, plus and iconic. So my dear friend, first of all decide, एक आप सोच बनाओ, क्योंकि if you think कि आपको कुछ करना है, तो वो आपकी सोच ही है जो आगे आपके मेहनत को एक डायरेक्शन देगा. Got it? So thank you very much. Take care. Bye. Again we will meet at 10 PM with the different approach of binary tree. So आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को at 10 PM. So never miss that particular class. Bye. Take care.